Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantab Publishers video lesson. Before starting the lesson, dear student, you must have with you class 5 English textbook, resource pack and summer pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantab Publisher official website. We will start our lesson from unit number 3, a visit to a village. SLOs of this lesson are develop listening and speaking skills, develop creative writing skills, and develop thinking skills. Now look at the page number 27 of your textbook. We have a writing workshop here. What it says, creative writing. Interview a classmate who belongs to a village and ask following questions. Note the answer and based on this information, write a short essay on life in a village. What you need to do, you have to interview your classmate who belongs to a village and you have to ask these following questions here. 7 questions you have to ask from your classmate who belongs to a village. Note the answer and based on this information, write a short essay on life in a village. First, you have to ask the question from your classmate, write down his answers in your notebook, and then on the basis of your answer, write a short essay, life in a village here. How you will write an essay? You have to go in a sequence like this. First, you will ask him about the name of his village and where it is situated. Describe the surroundings, total population, profession do the people adopt in your village, facilities, profession, जो वो लोग काम करते हैं. कारपेंटर हैं, किसान हैं, टीचर हैं, दुकान है, कॉबलर हैं, क्या है, प्रोफेशन क्या है उनका, लोगों का, फैसिलिटीज क्या हैं, आर अवेलेबल इन द विलेज. व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट द विलेज लाइफ. गांव की जिंदगी के बारे में उसकी फीलिंग्स भी पूछनी है आपने. तो यू हैव टू गो इन अ सीक्वेंस इन योर, जस्ट राइट डाउन हिज आंसर एंड देन फ्रॉम हिज आंसर you have to organize your information. First, you will write the name of the village in your essay, then where it is situated and describe the surrounding. Surrounding means how it looks. It has ponds, a river, a stream is flowing, नहरें बह रही हैं. वहां का नजारे कैसे हैं, आसपास क्या है, आपने ये लिखना है सराउंडिंग्स में. आसपास के माहौल को सराउंडिंग्स कहते हैं, आसपास की चीजों को. टोटल पॉपुलेशन आबादी की, आपने इसी तरह सीक्वेंस में अपने जाना है. जिस तरह आपने उसके आंसर नोट किए होंगे अपनी नोटबुक में, इसी तरह आपने ऐसे भी लिखना है. स्टार्ट से लेना, उसके आंसर के साथ के नाम क्या है, फिर सिचुएटेड कहाँ है, सराउंडिंग्स क्या है, पॉपुलेशन. इसी तरह आपने ये जो उसके सारे जवाब को लेके इसी तरह ऑर्गेनाइज करना होगा इन्हीं सवालों को लेकर अपने साथ. नाउ लुक एट हियर सम जनरल फैक्ट्स एंड अबाउट विलेज लाइफ इन पाकिस्तान. ये आपकी हेल्प के लिए भी है. यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम दिस. जनरल फैक्ट्स जो हैं गांव की जिंदगी के बारे में पाकिस्तान में. द विलेजर्स ऑफ पाकिस्तान कॉमनली लिव इन हाउसेज एंड मेड ऑफ ब्रिक्स, क्ले और मड. ईंटों, मट्टी और चिकनी, क्ले चिकनी मट्टी को कहते हैं, उससे बने हुए घरों में रहते हैं. दिस टिपिकली हैव 2 or 3 रूम्स. In the morning, fresh air in the village is very good for health. Even in today's modern age, old farming methods are used in villages. आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, उससे हल चलाया जाता है, लेकिन पहले वो ऐसे दरांती किस्म की ऐसे होती थी, उससे हल चलाया जाता था. आपके टेक्स्ट बुक में तस्वीर भी है. तो आजकल भी उसी मेथड से हल चलाया जाता है खेतों में. द पीपल of the village get together on the occasions of happiness and sorrow. Occasion, गम और खुशी के मौके पर लोग इकट्ठे होते हैं गांव में. This is your homework from summer pack. Write a paragraph on difference between village and city life. You have a very good idea of your unit number 3, so you can write this very easily. There is an activity here. Find 2 pictures showing village life and city life. Paste them below. You have to paste a picture of village life here and the city life here. Here is another question. Write a few sentences about your school. Tell from which SLO this question has been taken. You have to write some sentences about your school. Write a name, in which class do you read, how many rooms they have, playground, about cafeteria,
and teachers. Just write few sentences about your school. I hope you can do this very easily. Thank you.